Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we'll discuss Physics class 10 chapter number 18 Atomic and Nuclear Physics Numerical Problem Questions. Problem 18.1 is the half-life of nitrogen 16(7) is 7.3 seconds. A sample of this nuclide is observed for 29.2 seconds. Calculate the fraction of the radioactive isotope remaining after this time. जो हमें हाफ लाइफ दी हुई है कितनी है 7.3 है. टाइम हमें दिया हुआ है 29.2 सेकेंड्स. फाइंड क्या करना है जी रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप. फार्मूला जो लगेगा वो क्या है n इक्वल टू n नॉट इनटू 1/2 पावर n. रिमेनिंग मास इक्वल टू ओरिजिनल मास इनटू 1/2 पावर n. रिमेनिंग फ्रैक्शन के लिए हमने क्या करना है पुटिंग वैल्यूज ऑफ t इन द अबव फार्मूला. तो n इक्वल टू 29.2 डिवाइडेड बाई 7.3 n आ गया 4. तो जब हम n इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास n नॉट जो आएगा वो आएगा 1/16. Now problem 18.2. Cobalt-60 is a radioactive element with half-life of 5.25 years. What fraction of the original sample will be left after 26 years? जो हाफ लाइफ है वो कितने 5.25 ईयर्स है और जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है वो है 26 ईयर्स. हमने फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एलिमेंट रिमेन आफ्टर 26 ईयर. फार्मूला सेम फार्मूला लगेगा n इक्वल टू n नॉट इनटू 1/2 पावर n. रिमेनिंग फ्रैक्शन के लिए हमने क्या करना है पुटिंग वैल्यूज ऑफ तीन फार्मूला n इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 5.25 इक्वल टू 4.95. तो n इक्वल टू n नॉट इनटू 1/2 पावर 4.95. तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बचेगी ओरिजिनल सैंपल का वो क्या है 1/32. Now problem 18.3. Carbon 14 has a half-life of 5730 years. How long will it take for the quantity of carbon 14 in a sample to drop 1/8 of initial quantity? हमारे पास हाफ लाइफ दी है 5730 ईयर्स. हमसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ फ्रैक्शन अगर 1/8 है तो टाइम पीरियड उसको कितना लगेगा. टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ. Our quantity will drop to 1/8 of original quantity after 3 half-life. तो n by n not equal to 1/2 power n. n की जगह हमने 3 रख देना है तो n by n not equal to 1/2 power 3 हो जाएगा. n by n not equal to 1/8. Now putting the number of half-life and half-life in the formula. तो time equal to 3 multiplied by 5730 years. तो टाइम इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁴ years. Now problem 18.4. Technetium-99 is a radioactive element and is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney diseases. The element has a half-life of 6 hours. If there is 200 milligram of this element present, how much will be left in 36 hours? Technetium-99m. Half life हमें दी है 6 hours. Mass given 200 milligram. Time हमें दी है 36 hours. Mass left behind after 36 hours. n equal to n naught into 1/2 power n. Remaining mass, putting values of n naught and t in the formula. n equal to 36 by 6 equal to 6. तो n equal to 200 milligram into 1/2 power 6. तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा n का वो आएगा 3.125 into -3 यानी कि 3.125 milligram. Now problem 18.5 है. Half life of radioactive element is 10 minutes. If the initial count rate is 368 count per minute, find the time by which count rate reaches 23 counts per minute. टाइम दिया हुआ है हमें हाफ लाइफ का 10 मिनट्स. इनिशियल काउंट रेट 368 काउंट पर मिनट. फाइनल काउंट रेट 23 काउंट्स पर मिनट.
फाइंड क्या करना है, टाइम टेकन टू रीच फाइनल काउंट रेट. टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ. n by n not equal to 1 by 2 power n. n by n not equal to 1 by 2 power 4. So 368 divided by 23 equal to 16. N by n not equal to 1 by 16. Now putting number of half life and half life in the formula. 4 हाफ लाइफ है मल्टीप्लाई बाय 10 जो है वो हाफ लाइफ है, तो टाइम आ गया 40 मिनट्स. Now problem 18.6 is in an experiment to measure the half life of radioactive element, the following results were obtained. Count rate और time in minutes. 400 से लेके 25 तक हमें काउंट रेट दिया और टाइम इन मिनट 0 से लेके 8 तक. Plot the graph between count rate and time in minute. Measure the value of half life of the element from the graph. फाइंड क्या करना है, हाफ लाइफ सॉल्यूशन. अब यहाँ पे क्या है, काउंट रेट और टाइम इन मिनट्स के दरमियान हमने ग्राफ बनाया है. वाई एक्सिस पे हमने ले लिया काउंट रेट और टाइम्स इन मिनट्स हमने ले लिया एक्स एक्सिस. फाइनल हमारे पास जो इनिशियल है वो क्या है, 400 है. जब हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो कितना रह गया, 200 रह गया, यानी कि 2 मिनट जब गुजरे तो 200 हमारे पास रह गया. मजीद जब हाफ लाइफ गुजरेगी तो 100 रह गया मजीद, यानी कि एट टाइम्स इन 6 मिनट्स पे वो रह गया 50 और 8 मिनट्स के ऊपर रह गया वो 25. From the graph it is clear that half life of element is 2 minutes. Now problem 18.7 is a sample of certain radioactive element has half life of 1500 years. If it has an activity of 32,000 counts per hour at the present time, then plot the graph of activity of this sample over the period of time in which it will reduce to 1/16 of its present value. Half life है जी 1500 year, activity है जी 32,000 counts per hour. 1/16 activity यानी कि 32,000 divided by 16, 2000 counts per hour. y एक्सिस के ऊपर आ गया हमारे पास काउंट रेट. तो जब हाफ लाइफ गुजरेगी तो हमारे पास 8000 रह जाएगा, मजीद हाफ लाइफ गुजरने के ऊपर 4000, मजीद पे 2000 और मजीद पे 1000. From the graph it is clear that at 6000 years the activity will be 1/16 of original activity, that is 2000 count per hour. Half life of radioactive element was found to be 4000 years. The count rate per minute for 8 successive hours were found to be 270, 280, 300, 310, 285, 290, 305, 312. What does the variation in count rate shows? Plot the graph between count rate and times in hours. Why the graph is straight line rather than an exponential? Half life हमें दिया है 4000 year. काउंट रेट हमें दिया हुआ है 270, 280, 300, 310, 285, 290, 305, 312. सॉल्यूशन जो आएगा वो हमने ग्राफ बनाना है, काउंट रेट वर्सेस टाइम इन आवर्स. ग्राफ variation in count rate shows the random nature of radioactive decay. The graph is not exponential because of its long half-life as compared to period of 8 hours. Problem 18.9. Ashes from campfire deep in a cave show carbon-14 activity of only 1/8 the activity of fresh wood. How long ago was the campfire made? जो हमारे पास एशेज आ रही है फ्रॉम कैंप फायर में वो क्या शो करें, कार्बन-14 एक्टिविटी ऑफ ओनली 1/8 द एक्टिविटी ऑफ फ्रेश वुड. तो हमसे पूछा गया है कि वो कैंप फायर को बने हुए कितना अरसा हो गया. Activity of carbon-14 from ashes 1/8 of wood. Half life of carbon-14 5730 years. Find क्या करना है, टाइम फाइंड करना है. As activity of carbon-14 from ashes is 1/8 of fresh wood, hence 3 half lives have been left. So time equal to number of half lives multiplied by half life. So 3 multiplied by 5730 will be 17190 years. Now that's all about numerical questions. Objection number
18. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with your friends, and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.